चेत इतेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा राजस्तमो भाव कामलोभदयश्च ये चेत इत्तेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा राजस्तमो भाव कामलोभदयश्च ये चेत इत्तेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति. Yes, Prabhuji can recite the shloka. Please go ahead. तमो भाव कामलोभयत्याश्च ये चेत इतेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति. Okay, Mataji. तदा राजस्तमो भाव कामलोभदयश्च ये चेता इतिरनावेदं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति. Next. तथा राजस्तामो भावा कामालोभेदश्च ये इतर चेता इतर अनिविद्धं सितं सत्व प्रसिद्धति. Next. तथा राजस्तमो भावे कामलोभद्यश्च चेता इतर अनाविद्यं शितं सत्वे प्रसिद्धति. Okay. Yes, Bhavika Mataji, would you like to read the shloka? It is very nice. It's nice practice to recite the shloka because it purifies our heart. Because the shlokas are, it's like related to Krishna, so we should speak them. So if possible for you, so please unmute and recite the shloka. Would you like to recite? I'm audible to you? Okay, okay, let's go ahead. Translate word to word meaning. Tada, at that time, Raja, in the mode of passion, Tamaha, the mode of ignorance, Bhava, the situation, Kama, lust and desire, Lobha, hankering, Adaya, others, Cha, and Ye, whatever they are, Cheta, the mind, Itehe, by these, Anavidham, without being affected, Sthitham, being fixed, Satve, in the mode of goodness, Prasidati, thus becomes fully satisfied. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effect of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. So yesterday we studied about what we studied, that by studying the Bhagavatam or by serving the person Bhagavatam, the irrevocable fact that Supreme Lord is there, established in our heart, and moreover our heart gets purified, and the eagerness to hear the message of God will be there. है ना, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, how the heart will get purified when we serve the book Bhagavatam and person Bhagavatam. Now what he says, as soon as irrevocable loving service established in the heart, from the very text 1 to 6 we are studying, by unmotivated, uninterrupted devotional service, it can satisfy the heart. And it's like the goal of the main occupation of all the humanity is to attain the loving service to the Supreme Personality of Godhead. And how to do that thing, we have already discussed a lot. Only by devotional service, it can be done, or heart can be purified. And it says, by serving the Vaishnava, irrevocable loving service is established in the heart. How? By serving the Vaishnava, which Vaishnava, that is the Bhagavat Vaishnava. We studied yesterday, there are two Bhagavatam, a person Bhagavatam and a book Bhagavatam. A person Bhagavatam is a person who is living by the teachings of Bhagavatam, who is a live Bhagavatam, that is Srila Prabhupada. You know, he's an example in front of us. He's the Chalta Firta Bhagavatam in front of us. So that is the person who lives by the Bhagavatam, you know. So if we serve them, or do maybe even the menial services we do, that the irrevocable loving service is established in the heart. The effect of natures of mode of passion and ignorance. So jitna bhi ye effect hota hai, as says, because we are conditioned souls, so we are under the modes, isn't it? We act under the modes.
Every moment we are under the modes. But the thing is, as long as we are in connection with the devotional service or in connection with Krishna, we are away from the modes. As like in the morning, you woke up, you chant your japa, and you are away from the modes. The moment you are doing the Mangalarati, you are away from the modes. You can say the influence is very less, or insignificant influence. At the moment you are reading the Bhagavatam, modes are not there. Okay, when honoring the prasadam, modes are not there. When you are hearing katha, modes are not there. So the more you are in connection with the Supreme, the more the influence of the mode is very less. It doesn't. You can't say ki Mataji, like while Mangala, your mind is not wandering here and there. It can wander. While chanting, your mind will be wandering in something else. It can wander. But the point I wanted to make it, whenever you are in connection with the Supreme, because He is transcendental. So if you fully pay attention, you will be into the trance. But if you're not, then the influence of modes will be there. So we have seen in the Bhagavad Gita. Just 1 second, I'll show you something. I'll show you the image. All people might have seen Bhagavad Gita, isn't it? As we are studying Bhagavad Gita every day. So just try to look after this picture. Okay. How many of you would able to see this picture? See my profile. You would able to see. Sabko dikh raha hai? Hare Krishna. Is that everybody is able to see this picture? Yes. Or who else? Everyone able to see, na? So this is how. Yeah. So this picture is actually, this is what this picture is representing. It's showing a person jinko rassi se pakda gaya. The 3 ladies are upstairs, and above is the Supreme Person, Krishna. This Krishna is transcendental because he is above the modes. Krishna kahan hai? Guno ke upar hai. So that's why he is transcendental. But we are under the modes. Under the modes, modes ke andar hai. So isliye then we are like the puppets in the hands of modes. We are like the puppets in the hands of modes. We means we are all the time. It's not the mood swings, it's mode swings. Understanding? As you people will say, we have the mood swings. It's not the mood swings, it's mode swings. Mode swings means sometimes in ignorance, sometimes in passion, sometimes in goodness. So it's not the mood swings, it's mode swings. Mood is M-O-O-D and mode is M-O-D-E. So it's not the moods, it's the mode swings every time. So we are under the modes. So under the modes means you're not free. You're not free, you're not independent, and you're not dependent on Krishna. As we said, that iron rod, when put in connection with the fire, it acts like fire. अब जैसे लोहा है, ठीक है, उसको आप जब अग्नि के संपर्क में रखते हैं तो वो अग्नि की तरह बिहेव करता है ना. It started acting like a fire. So similarly, when we are in constant touch with Krishna, the transcendental nature of R will be awakened up, and the influence of passion and ignorance will be less. But you can ask a question, why it is not said here goodness? यहाँ पे goodness क्यों नहीं लिखा है? The effect of nature's mode of goodness. Actually, the point is the goodness is still good. Goodness is good. At least we are understanding certain position of ourselves that I am servant. ये कुछ हम लोग जान पाते हैं, मगर जब when we are into the passion and ignorance, the lust, desire and the hankering, these are all comes in the mode of passion and ignorance. Goodness में हमारी इच्छाएं अच्छी होती हैं, but जब हम लोग रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, so we have the lust, काम, क्रोध, मोह, लोभ. These are the things are there. So they will be disappear automatically when the loving service towards the Lord is established in our heart. And then the devotee is established in goodness. Uske baad mein you established in goodness, and he becomes completely happy. So at least we should try to come to the goodness. We have to try to the goodness. Actually, we have to come above the goodness that is called Shuddha Sattva Guna. Okay, Shuddha Sattva means coming into the transcendent mode. But at least we should try to come to the goodness. जैसे मैंने बोला, you can't become Uttama, at least become Madhyamadhikari. Raise yourself above the Kanishta platform. So we have to come to the Madhyama platform at least. So like the similar way, we have to at least be established in goodness. Then goodness se Sattva Gun mein jana, like the Shuddha Sattva, it's easy. So this is a very secret principle that Prabhupada has given. I think we are studying from the previous verses is also what's the importance of devotional service and how it is, once it is established in the heart, automatically all the ignorance and passion will go away.
You know, how much condition you are doesn't matter, but I remember Guru Mataji said one statement that's still in my heart. She says, even if you are not pure, still config remain fixed in your devotional service. अगर आपको लगता है आप शुद्ध नहीं हो, आप अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हो, doesn't matter, still remain fixed in devotional service. Like whatever services you are doing, regularly keep doing. But it is required to render some devotional service because we are not on Jnana platform. हम लोग ज्ञान प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है ना. We are not on the Jnana platform. Jnana क्या होता है? Just acquire the knowledge and just keep it and show other people. See how many shlokas I remember, how many knowledge I have. No. Gyan, we are not into the Gyan, we are into the Vigyan. As says Krishna consciousness is a scientific process. Scientific process मतलब जो experimented होती है ना? So we are studying the theory, then we have to put it into practice. As says that application is the perfection of hearing, you know. Application is the perfection of hearing. So whatever we hear, when we put it into practice, that is perfection, you know, perfection of hearing. So we just don't have to acquire the knowledge or note it down in our diaries, but we have to put it into the practice also, you know. जैसे बोला जाता है कि सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में जप कीजिए, wake up early in the morning, chant your rounds, you know, have only prasadam, don't eat outside. So these are practical things. Okay, we'll go to the purport now. A living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. यहाँ पे लिखा है normal constitutional position. Normal position क्या है जीवात्मा की? That is Satchit Ananda, means he is full of knowledge, full of bliss and eternal. Isn't it? This is the natural position of a jiva. And what else? Jivara Swarupa Hoy, Krishna Nitya Das. So we are the servant of Lord. So when we act in that way as a servant of Lord, then we are satisfied and will be in spiritual bliss. But otherwise, if we are not acting in as our position being in servant, we act like a what? Masters. So-called masters. और उससे क्या होता है? Then we are dissatisfied, troublesome, disturbed. The independent nature is not good. We have to give up our independent nature and have to be subordinate to the Supreme Person or to the Vaishnavas. Then we can grow. Independently, जब हम चलते हैं तो हम भक्ति नहीं कर पाते. You remember the pastimes of Draupadi Maiya, when the Draupadi का साड़ी निकाला जा रहा था, तो she was like with the one hand she was holding the sari and the one hand she was chanting, Hey Keshava, Hey Murari, Hey Mukunda. Like she was intensely praying to Lord. अगर उनका उस टाइम पे एक हाथ ऊपर करके हम प्रेयर सुनते हैं, हम बोलते हैं अरे बाप रे, हमारा तो इतना लेवल ही नहीं है. Because she was so intensely praying, but Krishna didn't came. Why? Because we are holding on to the Maya, the sari. She was holding on to the sari. She was having that thing. If Krishna doesn't come, I have my plan that I can work on. I can save myself. She was having that independent nature. It's somewhere कि नहीं, I can work on at my own also. मैं अपने आप की रक्षा कर सकती हूँ. That independent nature should be given up. So what happened when she raised both the arms, when she realized, no, now I cannot do anything, it's out beyond my capacity, then she raised both the hand and she was loudly chanting, Hey Mukunda, Hey Keshava, Hey Murari, now save me, please come. And then Krishna supplies unlimited sari and saved him. So similarly, we need to give up our independent nature. If we are not able to independent nature able to give, then we are in abnormal position. आप लोगों ने देखा होगा, you have heard about कई बच्चे abnormal होते हैं. Abnormal मतलब they are not like the normal child. Like they don't talk in a way that a normal child talk. They don't walk in a way that a normal child walk or behave or act. तो उनको उनके लिए स्कूल अलग होता है, ये एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग रहता है. मगर देखा जाए, so what is the abnormal position? Abnormal position is when you are not into the servant position. What is the abnormal position? When you are not into your servant position. Servant to whom? Not to Maya. बोले माता जी अभी भी servant है हम लोग, मगर अभी माया के हो ना. We have to be the servant of Krishna. Then we are into our normal position. For example, the water is there. जैसे पानी होता है ना. So पानी है अभी मतलब ठंडा रहता है, flow करता है. That is a natural nature of a water is to flow. But under certain circumstances it become an ice. वो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है. तो वो क्या उसका नॉर्मल स्टेट है? नहीं. उसका नॉर्मल स्टेट क्या है? बहना पानी में. ठीक है. तो सिमिलर वे वी आर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हेन वी आर इन कांटेक्ट विद मटेरियल नेचर, वी हैव दिस बॉडी, सो वी आर इनटू conditioned state, or we can say the abnormal state. We are considering ourselves a body, not the soul, and that's why we are not happy, because we have false ego. So that's why we are not happy. So what he says, the state of existence is called Brahma Bhuta and Atmananda.
that when the spirit soul is in his constitutional position और खुश रहती है तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, as stated in भगवद गीता. तो जब हम इस ब्रह्म भूता स्टेज में होते हैं, then we are very happy, you know. The state of self. You Puja Matari, you want to say something? आपको कुछ कहना है? You are unmuted. Okay, maybe by mistake. This self-satisfaction is not like the satisfaction of inactive fool. The inactive fool is in a state of foolish ignorance, where the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. ठीक है, जैसे I remember Tamal Krishna Maharaj had one statement. He said, Tamal Krishna Maharaj ने एक statement कहा था. He says, Krishna consciousness means anesthesia consciousness. आप सबको पता है anesthesia क्या होता है? कि आपका जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है वहां आपको एनेस्थीसिया दे जाता है, आपका वो बॉडी क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है, मतलब उसको बाहर का कुछ भी इफेक्ट नहीं महसूस होता है ना. तो सिमिलरली जो फुलिश लोग हैं उनके लिए सेटिस्फेक्शन क्या है? अपना इंद्रिय तृप्ति होना है ना. दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन एक्चुअल सेंस, बट वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, he is not influenced by the external things. That is called, he was totally situated, he is called self-satisfied. मैंने आपको बताया था कि सेटिस्फेक्शन में क्या अंतर हो, सैचुरेशन एंड सेटिस्फेक्शन में क्या अंतर होता है, मैंने बताया था ना. सैचुरेशन पॉइंट क्या है? व्हेन यू आर इनटू द, आप प्रसादम हॉल में हो, ठीक है, आपको गुलाब जामुन सर्व किए जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन यू आर ऑल ईटिंग गुलाब जामुन. ओके, सो सुबह सुबह पानी आ रहा है मुंह में, मेरे मुंह में आ रहा है गुलाब जामुन. आई लाइक गुलाब जामुन. सो आपको गुलाब जामुन सर्व किए जा रहे हैं, तो आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो. एक टाइम के बाद आप बोलोगे बस अब और नहीं. दैट इज एन सैचुरेशन पॉइंट. आपकी आंखें अभी भी भरी नहीं है, you still wanted more, but the thing is now you are full, your stomach is not allowing to pop up one more gulab jamun. That is not satisfaction. You say हाँ बस अब संतुष्टि. वो संतुष्टि नहीं है, आपका सैचुरेशन आ गया भाई. You won't able to get one more gulab jamun inside you, क्योंकि एक और खाया तो वॉमिट कर जाओगे जो अंदर भी है, isn't it? That time we desire so many mouths so that we can have more gulab jamuns. But it's your saturation point. ये आपका saturation point आ चुका है, क्योंकि आप इसके अलावा और नहीं ले सकते हो, isn't it? मगर satisfaction क्या है? What, this is not satisfaction because you have the desire to have more. अभी भी आप में इच्छा है, बट बात ये है कि आप ले नहीं सकते हो क्योंकि अंदर कैपेसिटी नहीं ना, पेट फुल है. एक्स्ट्रा लिया तो you will be vomiting, isn't it? So this is not satisfaction. Okay, जो foolish ignorance लोग हैं, जो भौतिकवादी हैं, materialistic हैं, they considered अच्छा ये इच्छा पूरा हो जाएगा, I'm satisfied. No, you can never be satisfied. Like मोबाइल मिल जाए, iPhone मिल जाए, I'm satisfied. You will get more desire. Let me get iPad also. Let me get Mac Pro. You know, you're getting more and more desires. So that is not satisfaction. वो कहता है ना, दुष्परे न लेना चाह. The material desires are like that. The more you feed your senses, the more the desires you will be getting. आप और इच्छा करते हो. And what is satisfaction? Accept whatever it is coming. Means accept Krishna's plan. That is satisfaction. Like मैंने आपको वो स्टोरी सुनाया था उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी का. He was having 500 उनका सैलरी था, है ना, उनका मंथली सैलरी 500 रुपीज था. So one of his friend came to him and said, I want 5,000 रुपीज, क्योंकि मेरा काफी क्राइसिस चल रहा है, so I want 5,000 मुझे उधार में दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा. तो लाल बहादुर शास्त्री said, मेरा तो 500 रुपए सैलरी है, how I can give you 5,000? I don't have. So this person, after many years, returned back to Lal Bahadur Shastri and thanked him. Thank you so much that you helped me in my crisis time. तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मैंने तो आपको पैसे दिए ही नहीं. Then how? Why you are thanking me? He says, no, but your wife gave me 5,000 rupees. Then he was shocked कि मेरी पत्नी ने 5,000 रुपए कहाँ से दे दिए. So he asked his wife कि आपने कहाँ से arrange किया 5,000? तो his wife said कि आपका 500 रुपए सैलरी है ना, तो 400 रुपए में हमारा सारा खर्चा चल जाता है, तो 100 रुपए बचते हैं तो मैं उसको सेव करती थी, तो वहां से मेरे पास 5,000 था तो मैंने दिया. So what had happened? Lal Bahadur Shastri wrote a letter to a government saying कि मेरा 400 रुपए में मेरा सारा खर्चा चल जाता है, मेरी 100 रुपए सैलरी कम कर दो. I just need 400 rupees. This is called satisfaction. Understanding the point? We people are like, और दे दो, चाहे उतना हमको जरूरत भी नहीं है, but we want more. But here the person saying 100 रुपए काट लो, जरूरत नहीं है, 400 में खर्चा चलता है. This is just a mundane example I'm giving. This is satisfaction, and another satisfaction is like whatever is coming our way, saying that as Krishna's plan, we should accept it. Like either I'm rich or poor, I should accept it. Krishna, wherever you have put me, let me just be into the devotion.
That is satisfaction. Don't hanker for material desires. So when your desires are towards Krishna, then the satisfaction is there. But when it is the material, then only the saturation point will come, but not the satisfaction. Okay. So for the devotees, the satisfaction, how they are Atmanandi, because first of all, they don't get influenced by the material modes, because they are into the trance, they full-time engage in devotional service. And the another point is they depend upon Lord Hari. They don't carry the independent nature, our plan, my way, thy way. No, they don't carry my ways. They don't carry the my way or highway. Mera way ya to highway ka way nahi. We are into the Lord's way, you know. So that is self-satisfaction will be there. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. तो ये stage कब आ जाता है? When we are fixed in our devotional service. As I said, as the Guru Mataji quoted it, even if you are not pure, remain fixed in devotional service. Remain fixed in devotional service means keep doing the devotional service. A point will come when it is on a very pure stage. Okay, so that will come, but we have to remain fixed in devotional service. We should do some devotional services. It says devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. Devotional, please make note of this statement. It says devotional service is not inactive. Inactive मतलब बैठे बैठे हाँ जी हमारा तो भजन चल रहा है. No, you have to do some practical service. Either cook for Lord, go for book distribution, clean the temple, or do the dressing, do something, some active service should be there. Some practical service should be there. Then it is there. It is an unalloyed activity of soul. Unalloyed matlab no motivation. Without motivation, you're just serving the Lord, you know. As says unconditional love. So like that way, we have to serve the Lord without expecting anything in return. Okay. Then it says, the soul's activity becomes adulterated in contact with matter, and as such as the diseased activity are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. जैसे बताया जाता है एक्टिविटी बिकम्स अडल्ट्रेटेड, मतलब जैसे प्रपाद उदाहरण देते हैं, जब बारिश होती है तो पानी बहुत प्योर होता है, वी कैन ड्रिंक डायरेक्टली, बट द मोमेंट द वाटर केम इन कांटेक्ट विद द मड इट बिकम डर्टी, फिर उसको प्यूरिफाई करके ही पी सकते हो आप, ऐसे तो नहीं पी सकते क्योंकि गंदा हो गया. तो सिमिलरली वी वर प्योर इन नेचर व्हेन वी आर इनटू द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड, बट द मोमेंट वी हैव कम इन कांटेक्ट विद दिस मटेरियल नेचर वी हैव बिकम डर्टी. डर्टी विद लस्ट, डिजायर, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. We are self-centered, ना, हम लोग self-centered है, मेरे लिए होना चाहिए, I, me and mine. Hankerings are there, desires are there to satisfy oneself, not through the Lord, but खुद का नींद आता है इतना सोते ही रहना है. That is called mode of ignorance, and the form of lust is there. When the lust is not fulfilled, the frustration comes, anger arises, and lust, anger, and greed are the three gates to hell. So these things happen when we are into conditioned state, and these three things are our greatest enemy. ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं. But the effect of devotional service become manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. तो ये passion and ignorance को कौन खत्म कर देता है? I remember the prayer of Srila Prabhupada. जलदूता में उन्होंने एक prayer लिखा था अपना, जिसमें प्रभुपाद ने लिखा था कि ये जो पाश्चात्य देश के लोग हैं कृष्णा, ये लोग तो रजोगुण और तमोगुण से भरे हैं. ये कैसे मेरा मैसेज सुनेंगे? How they will listen this message of Godhead? Because it will not penetrate their ears. ठीक है. अब जैसे कोई भी पात्र है, पात्र मतलब इट्स लाइक अ बाउल, यू नो, बाउल. अगर बाउल को ऐसा उल्टा रखा है तो अगर ऊपर से पानी डालोगे तो क्या ठहरेगा उसमें? पानी नहीं ठहरेगा जब तक इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन ऑफ लाइक दैट टू होल्ड समथिंग, इजंट इट? तो जब तक पात्र को आप उसकी प्रॉपर एक्चुअल पोजीशन में नहीं रखोगे तो आप कुछ होल्ड नहीं कर पाएगा, उल्टा रहेगा तो नहीं हो पाएगा. तो पैशन एंड इग्नोरेंस क्या है? हमारे हृदय को उल्टा बना देता है, कुछ भी पेनिट्रेट नहीं करता है. You know, this the lust, anger, desire, we weren't able to have that thing to hear the message of Krishna. जब हमें ये पैशन और इग्नोरेंस होता है ना, हमारा मन नहीं करता भक्ति करने का, ना तो हम कुछ सुनना चाहते हैं. तो प्रभुपाद ने उस समय क्या था, ये पाश्चात्य देश के लोग हैं, ये तो रजोगुण और तमोगुण से भरे हैं, ये मेरा मैसेज कैसे सुनेंगे, आपका ये होली नाम कैसे सुनेंगे? नाउ यू ओनली डू सम मर्सी कृष्णा, देन ओनली they would able to listen something. Srila Prabhupada was praying to Krishna, have some mercy so that these people will able to hear, you know, this is a pure devotee. So how we can eliminate this passion and ignorance? Here the point I wanted to make it, by the causeless mercy of Vaishnava. By the causeless mercy of Vaishnava. And how the causeless mercy come? We have to become little qualified to have the causeless mercy, na? So we have to serve the Vaishnavas or beg
But otherwise, you might be very fortunate, some devotee come and show some mercy. So then only this passion and ignorance will go. The devotee is fixed at once in the mode of goodness, and he makes further progress to rise to the position of Vasudeva. And the state of unmixed sattva और शुद्ध सत्व. तो जब हम फिक्स्ड हो जाते हैं अपनी भक्ति में, तो हम सतो गुण को भी पार करके शुद्ध सत्व गुण में जाते हैं. ठीक है? Only this शुद्ध सत्व state can one always see Krishna face to face by dint of pure affection for Lord. तो जब तक आप कृष्ण को face to face नहीं देख पा रहे हो ना, तो understand you are still under the modes, or you can say you are under the mode of goodness. So you have to come to that platform to शुद्ध सत्व गुण. That will be the perfection. ठीक है? Further he says, a devotee is always in the mode of unalloyed goodness. Therefore, the unalloyed मतलब alloy क्या होता है? How many of you know alloy? आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th में I think. Mixture of two or more metals. Yes, mixture. Amalgamation ना, किसी का amalgamation होता है ना? Alloys are the, जैसे stainless steel is alloy. Steel is a alloy. Alloy है ना ये? Hope I'm giving the right example. मैंने साइंस थोड़े सा. ठीक है? These are the alloy मतलब mixture. और unalloyed मतलब no mixture. Unalloyed means no mixture. Alloy means a mixture, but unalloy means no mixture. So mode of no mixture goodness means shuddha, pure goodness, you know, devotee is always in a pure goodness. Then therefore he harms no one. इसलिए वो किसी का द्वेषी नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं करता, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता. But the non-devotee, however educated he may be, he is always harmful. अब जो नॉन डिवोटी है वो चाहे कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, वो हमेशा ही हार्मफुल रहता है. He always have certain bad qualities. A devotee is neither foolish nor passionate. भक्त जो होता है ना तो वो बेवकूफ है और ना ही रजोगुण में होता है. The harmful, foolish and passionate cannot be devotees of the Lord. However, they may advertise themselves as devotee by outward dress. जैसे मैंने बोला, कई लोग बाहर से कंठी पहनते, तिलक लगाते, अच्छा सुंदर सुंदर दिखते हैं, but they might be a kali chela in the disguise of a devotee, but they might be a kali chela, because devotees are the internally clean. External तो होते हैं मगर internally भी they are clean. They don't carry any selfish motive. Their only selfish motive is to bring other person into Krishna consciousness somehow or other. यही उनका एक selfish motive होता है और कुछ नहीं होता है. ठीक है? A devotee is always qualified with all the good qualities of God. Quantitatively, such qualification may be different, but qualitatively, both the Lord and his devotee are one and the same. So quality wise देखा जाए तो भगवान और भक्तों में कोई अंतर नहीं है, same गुण होते हैं. Quantity may be vary, but qualities are the same. ठीक है? With the Lord and the devotee, because we are part and parcel of Lord. So one who is realize that and act in a devotee way, तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता गुणों के आधार पे, मगर क्वालिटी में क्वांटिटी में भी आप वेरी करें, मगर क्वालिटी तो वही रहता है. ठीक है? अब जैसे सोना है तो सोने के गहने का भी क्वालिटी सेम रहेगा ना, क्वांटिटी में भी वेरी करे, मगर जो सोना खादान में है या ज्वेलरी की शॉप में मिल रहा है, क्वालिटी इज द सेम but the quantity may vary, isn't it? So similar way, how this nature acquire, when we are more into Krishna's association, the more our quality will be becoming more and more pure as Krishna, you know. So you don't have to acquire external qualities. जब भी हम भगवान के संग में तो उनके सारे गुण हम में आ जाते हैं automatically. Devotees carry the deva gunas, you know, demigods की जैसी qualities होती हैं उनमें, so they become more and more pure. So when one is in a pure stage, that doesn't harm anyone. Okay, so we will be stopping here for the time being. Yes, so we have discussed. Now I would like to hear from all of you what your all understanding or any questions. So please speak up. So don't waste any time. So please go ahead, come in front. As I said, for Krishna Katha, don't be shy. Always come in front, discuss or speak something, because it will make conversation more relishable. So please go ahead. I have done my part. Now it's your part. So I would like to listen something now. Yes, go ahead. Who will be the first person to speak up? Yes. Who would like to speak up? Any questions or realizations or comments or any additions? So please go ahead. Yes, Komal Mata ji, you go first today. आप बताओ पहले, खाना तो नहीं बना रहे हो आप? हरे कृष्णा. या महाविष्णु की फॉर्म में तो नहीं चलेंगे? हाँ जी. माता जी मैं खाना बना रही हूँ. Okay, any point you heard और जो आपको स्ट्राइक किया? I think she is busy. Yes, who else will be there? Pooja Mataji, Parth, Astha, please go ahead. Don't wait for me to take your name. So you should yourself come in front voluntarily and speak up. Yes.
हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। जो हम जब मुसीबत में होते हैं और जब हम मतलब ट्रबल्स फेस करते हैं लाइफ में। What happened, Parth? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतलब जब हम लाइफ में ट्रबल्स फेस करते हैं और जैसे कि आपने प्रहलाद और द्रौपदी का वो वस्त्रहरण वाला एग्जांपल दिया था ना अभी। Yes. तो मतलब द्रौपदी तो फिर भी थोड़ा सा हायर लेवल में ही थी ना। तो हम लोगों को तो पता नहीं कितने हर्डल्स फेस करने होंगे, है ना। तो भगवान हमको ट्रबल से बचाते भी हैं और ट्रबल्स फेस करने की शक्ति भी देते हैं और ट्रबल्स हमारे लाइफ में देते भी हैं, है ना। तो ये जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, ये तो हमारे पिछले कर्मों की वजह से भी हो सकता है, या है ना। लेकिन जो But I'll उद्धार tell you one thing. I'm sorry, I'm cutting you in middle. देखो, Lord doesn't brings the troubles for us. First of all, ठीक है, भगवान हमारे लिए ट्रबल नहीं लेके आते हैं, हमारे खुद के कर्मा है जो हमारे बीच में आते हैं। या समटाइम टेस्ट कम, बट दैट टेस्ट कम फ्रॉम माया देवी। जो हमारे लिए टेस्ट आते हैं, जो हमें ट्रबल लगते हैं, वो माया देवी के टेस्ट होते हैं टू चेक आर वी फिक्स्ड अप इन आवर डिवोशन और नॉट। Because Lord he is more eager than us to take us back to Godhead. So he is trying his best to take us back to Godhead. So any trouble we face, it's either our own karmas or either it's a test by Maya Devi to check either we are fixed in our devotion or not. Okay? Because Lord is always there to give protection to the devotees, always there to favor his devotee. As Krishna says in Bhagavad Gita 9:22, I preserve what you have, I provide what you lack. And Krishna says, my name bhakta pranashyati, my devotee never perishes. So he takes one who is fully surrendered unto the Lord. Krishna take full charge of the devotee. Understanding? Yes, please go ahead. हाँ मतलब मैं समझ गया। मैं ये कह रहा था कि ट्रबल्स भी हमारे द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं ना। Yes. जो पास कर्म है। Yes. तो हाँ, तो फिर हमको जन्म इसीलिए हमने इस भौतिक दुनिया में इसीलिए जन्म लिया है कि पुराने जो कर्म है उसको भोग सके, है ना। नहीं, we have taken birth because we are envious of Lord and we are you can हम लोग इधर इसलिए आए हैं क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते थे। That's why we are in the material world. ठीक है, we are not here to finish up our karma. हम लोग गोलोक में कौन से कर्मा क्रिएट कर रहे थे? We are not creating any karma in Goloka. But because we are envious, so we fall into the material world. And we are struggling in the birth death cycle में because we are creating karmas. यहाँ पे आगे कर्मा क्रिएट करना शुरू किया. But we exist to love Krishna. But we forget that thing and we want to enjoy separately. That's why we are in the material world. ठीक है, हम लोग भौतिक जगत में इसलिए आ गए. But now ये तीन गुण इसीलिए हैं, हम लोग को बार बार ट्रबल देते हैं कि हम जाग सकें कि भाई तुमने गलती की थी भगवान से द्वेष करके. नाउ प्लीज वेक अप, understand your position, serve Lord and go back to God and don't struggle in this cycle of birth, death, old age and disease. Okay? Understood, Parth? दी एनवीएस वाला नहीं समझ में आया। मतलब एनवीएस मतलब क्या, द्वेष क्यों लड़ाई किया हमने भगवान से? द्वेष इसलिए नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल भगवान लड्डू खा रहे थे, ठीक है, और हमारे मन में आ गया कि क्यों नहीं ये लड्डू मैं खा लूं पहले. We just got that desire to have laddu before offering to the Lord. And that one desire bring us here. Because the only enjoyer in the spiritual world is Krishna. We are the servant. Because the purpose of our existence is to love Krishna. And love means service. But we don't like to serve Krishna. We wanted to enjoy separately. हम proprietor बनना चाहते थे. तो वहां पे तो proprietor एक ही है भाई कृष्णा. तो वहां तो रह नहीं सकते. तो कृष्णा ने बोला ठीक है, आप proprietor बनना चाहते हो, आपके लिए अलग से दुनिया बना देते हैं. वहां पे अपने आप को, यहाँ पे सभी लोग अपने आप को proprietor ही समझते हैं ना. Not jealousy, Asta. It is enviousness is little different. Understanding? Enviousness is little different. Okay. So that's why we landed up here in the material world. The desire come to us. I wanted to be proprietor. यहाँ पे आके क्या बोलते हैं हम लोग? मैं करता हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से खा रहे हो तुम लोग. So we are like, we consider ourselves a proprietor. तो वो situation यहाँ पे इसलिए because वहाँ पे जाके यही इच्छा हमारे मन में है, we want to become a proprietor. So like that way. ऐसे का हमें कृष्णा, हमें ये नहीं पता था कि हमारे वो जो थॉट है वो हमें कृष्णा से अलग कर देगा. That we doesn't want it. But वो जो इच्छा हमें आई ना, वो इच्छा हमें यहाँ पे लेके आ गई. We would have wanted to get away from Krishna, but that desire can't be fulfilled there.
तभी मैं कहती हूँ ना, be very careful with your desires, because when you're leaving your body, if you even get a tinge of a desire to enjoy, Krishna will not allow you to go to Goloka. He will say you fulfill your desire. You still wanted to enjoy separately. So we have to be very careful with our desires. Okay? Get the point, Parth? हाँ दी, मतलब आपको नहीं लगता एक ऑफेंस के लिए ये बहुत बड़ी सजा है? ऑफेंस नहीं है तो अपराध भी तो, सोच भी तो बहुत बड़ी है ना ये। मैं प्रोप्राइटर बनना चाहता हूँ, आप कैसे बन सकते हो? कृष्णा, ये अपराध नहीं है। वन सेकेंड, आई आंसर योर क्वेश्चन। प्लीज डिवोटीज, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये मीटिंग खत्म होने वाला है। प्लीज कम अगेन एंड ज्वाइन। यस पार्थ, तुमने बोला कि इतने से ऑफेंस के लिए इतना बड़ा सजा क्यों मिला है? यस, पार्थ सेड कि इतने से ऑफेंस के लिए इतना बड़ा सजा क्यों मिल गया हमें? ये सजा बड़ी नहीं है। कृष्णा ने, हमारे तो थोड़ी सी इच्छा आई थी, अब वो वहां पूरी नहीं ना हो सकती थी। कृष्णा इतने लविंग है ना, फ्री विल दिया है हमको, हमारी सिर्फ फ्री विल ही है। सो कृष्णा उसमें इंटरफेयर नहीं करते। कृष्णा कहते हैं अच्छा तुम्हें एंजॉय करना है, मगर ये इच्छा यहाँ तो पूरी होगी नहीं, तो वो आर्टिफिशियली आपको सरप्रेस नहीं करना चाहते, या आपको फोर्स नहीं करना चाहते कि नहीं नहीं ये गलत इच्छा है, मैं ही राजा हूँ यहाँ का, तो मुझे फॉलो करो। नो, ही इज वेरी काइंड, ही सेज ओ यू गेट दैट डिजायर, बट ये यहाँ पे फुलफिल नहीं हो सकती, फॉर दैट वी हैव टू गो देयर, and we agreed to that and we came here. But Krishna just sent her to just fulfill and come back, but we were the people who remain in the cycle here. हम अब जाना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया के लोगों को बोलो भाई चलो गोलोक, कहाँ गोलोक, हमें नहीं जाना, ये अच्छा यहीं पे जीना है हमको। So they were like that way. So it's not a, and for Krishna it's like a fraction, time relativity का भी टाइम आता है यहाँ पे, but हम लोग टाइम इमेमोरियल से we are struggling here. So क्योंकि जो इच्छा हमें थी वो वहां पूरी नहीं हो सकती थी, and Krishna doesn't want to force us. जैसे ना प्रेम के लिए भी ये बार बार खोल दी, बंद कर दी, हवा अंदर। पूजा माता की वजह थोड़ा ठीक है, बट थोड़ा इधर तो म्यूट हो भी कर दो। हाँ जी, हरि बोल माता जी, धन्यवाद। So that is their part. So desire can't be fulfilled there. Krishna is so kind, he doesn't want to force anything onto us. हमें तो वो सिर्फ इच्छा ही आया ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि I want to enjoy. So Krishna says ये यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती है। तो we had the desire, he just wanted us to fulfill the desire. So for that, but उसके लिए हमें पे कितना करना पड़ा? We are struggling here. उस टाइम पे हमें समझ नहीं ना आया. So that just one desire brought us here in the material world. So it's nothing that Krishna is like, अच्छा उससे अलग पढ़ना चाहते भाग जाओ यहाँ से. But see how kind he is. He doesn't even made the world, but he came along with us as a super soul to guide us. But how many people we are listening to the instructions of Krishna? Krishna तो बोल रहे हैं आ जाओ. भगवद गीता कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, but how many of us are doing that surrender? Are we doing? Yes, Parth? तो हम लोग कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति, है ना? पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी, आया होगा जो यहाँ भोग रहे हैं। That Manu's Gadi. So now make this Manu's Gadi into a very auspicious time. Krishna says, surrender unto me, sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tam sarpapebhyo mokshasami ma suchaha. I will make you pure. I will take care of your all the sinful reaction. Just surrender unto me. But are we taking that instruction? आप उस पे regret कर रहे हो उस moment पे. Now just fully surrender to Krishna. Yes, Parth, will you do that thing? Full surrender to Krishna? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल। All the best. मैं एक Yes, माता जी. मतलब इसमें मैंने सुना था, एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स के सामने जिद करते हैं कि हमें भी खेलना है, मतलब वो देखते हैं कि पेरेंट्स ऐसे कुकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको वो बोलते हैं हमें भी घर घर खेलना है। तो फिर क्या पेरेंट्स उनको घर थोड़ी बना के देते हैं, ऐसे खिलौने लेकर देते हैं, छोटे छोटे बर्तन देंगे, बट वो सब आर्टिफिशियल है ना। वैसे हमने भी कृष्णा के सामने जिद की हमें भी प्रोप्राइटर बनना है, ये करना है, तो फिर कृष्णा ने हमें ऐसे एक पूरी रिफ्लेक्शन बना के दी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, बट यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। बच्चे खिलौना मतलब कुकिंग खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, बट वो सच थोड़ी होता है। तो वैसे ही मतलब हमें भी ऐसा बना के दिया कृष्णा कि चलो तुम भी एंजॉय करो, तुम भी ऐसा बनो। बट यहाँ पे आके हम लोग उसको मतलब जैसे बच्चे खेलने लग जाते तो इतना खेल में बिजी हो जाते, उनको ध्यान ही नहीं रहता ये खेल, मतलब हम यहाँ पे बस खेलने आए थे, हमें मतलब घर भी जाना है। तो वहाँ वैसे हम लोग भी इतना ज्यादा बिजी हो गए इस घर घर की खेल में, यहाँ पे ये घर, ये रिश्तेदार, वो एक्चुअल में ये सब रिफ्लेक्शन है, सच कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो गए इसमें, तो तब से इधर ही घूम रहे हैं। The thing is, जैसे very apt example Mataji gave. She's Priya Mataji. Those who are not able to see, so she is staying at my home for some time, so she's here. So she put it up the analogy like छोटे बच्चों को खिलौना दिया जाता है तो थोड़े समय से बच्चे उसको रियल मान लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इस टेम्पररी वर्ल्ड को रियल समझ लेते हैं और कहते हैं नहीं यही घर है, यहीं पे सुख है, बट ये सुख नहीं है, ये इल्यूजन है, इट्स टेम्पररी. ओके,
So like that we have to come to our realization. But the thing is, Krishna is not going to force us. He has given us his instruction. He has sent it his devotee. Now it's our endeavor that will take us back to Godhead. तो हमें प्रयास करना है, भगवान की कृपा आएगी, then we will be going. ठीक है, तो हमें endeavor करना पड़ेगा. We have to be determined. I don't say endeavor, but we have to determine. We have to be very determined. I want to become pure devotee and want to become now. Then you will be go back to Godhead. Fine. Yes. Thank you, Mataji. Yes. Any further question or comments or realization? Yes, Astha Mataji, go ahead. Hare Krishna, Mataji. Very well. Yes, Mataji, as in the shloka mentioned, like by doing devotional service to Krishna, we can remove this effects of modes, Passion and the modes ignorance. effect. Yes. Yes, passion, Yes. ignorance, and lust, like sometime और फिर बीच में Astha, If your the loving voice not coming. Hari bol. Hare Krishna. फिर माता जी आपने बीच में हरे कृष्णा. आस्था, बच्चे आपका आवाज कट रहा है बीच में. 2 मिनट रुक जाओ. खत्म होने ही वाली है. तुम तैयार हो जाओ. यस आस्था आपका आवाज कट रहा है बीच में. क्या बोला? बोलो. हरे कृष्णा. आस्था, you are not audible to me. Your voice is not coming to me. Okay, till then she's fixing up her mic. Pooja Mataji and Bhavika, do you have anything? So please go ahead. Astha, just fix up your mic because you are not. Fix up your mind on Krishna and fix your mic, so because you are not audible to me. Yes, Pooja Mataji, go ahead. माता जी जैसे ना अभी आपने बताया कि हमारे डिजायर्स थे तो हाँ हम जी. गोलोक से मतलब यहाँ पे आए. तो आई यूज्ड टू टेल टू पीपल, जैसे मेरे मम्मी और सारे बैठे होते थे तो मैं उनको बता रही थी गोलोक में ऐसा होता है ऐसा होता है, मतलब बहुत अच्छा है. हाँ. तो वो कहते अरे पागल है, वहां कौन जाएगा, वहां जाके तो सेवा करनी पड़ेगी, हम यहीं पे ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट चुगलियां तो करता है ना बैठ के. हम यहाँ पे चुगलियां कर रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, जो मन कर रहा है, वहां जाके हम क्या करेंगे. तो मैं सोच रही थी कैसे समझाऊं इनको. Actually, they doesn't know na what is the love of sap until he says in Brahma Samhita, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hitayeshu Vilokayanti Yamashama Sundaram Achinta Guna Sarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. तो जब तक ये प्रेम अंजना नहीं आएगी ना आंखों में भगवान के लव ऑफ लविंग डिवोशन सर्विस नहीं आएगी, we won't able to understand these things. तो वो क्या है ना, तभी तो क्योंकि इग्नोरेंस में ना, विद्या में, तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान की सेवा में कितना आनंद है. So they just wanted to gratify their senses. So that's why they are not able to relish. पर उनको बोलना ये थोड़े समय का ही आपका जो है चुगली करना है, मगर वहां जाके असली आनंद तो सेवा में ही आएगा. So tell your mother कि आप जब हमारे लिए खाना बनाते हो तो क्या आपको संतुष्टि नहीं होती जब आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से प्यार से बनाते हो? होती है ना. वो क्या आप कोई वो ऐसे ड्यूटी करते हो क्या? हाँ, बच्चे इतनी जिद्द करते हैं, मैगी बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ. बट मदर इज वेरी हैप्पी टू सर्व द चाइल्ड. दिस इज आउट ऑफ लव ना. तो फिर पूछना कि आपको सेवा करके मजा नहीं आया, और बोलना यहाँ कौन से प्रोप्राइटर, यहाँ पे भी तो अपने पति की सेवा कर रहे हो, बच्चों की सेवा कर रहे हो, सोसाइटी की सेवा कर रहे हो, औरतों की सेवा कर रहे हो, चुगलियां मार मार की, तो ये भी तो सेवा ही कर रहे हो ना. तो बोलना यहाँ पे भी तो सर्वेंट हो, यहाँ कौन से मास्टर बन के घूम रहे हो. यू जस्ट टेल दिस यू माइट एबल टू अंडरस्टैंड. ये बात मैंने सोची नहीं थी वैसे. ये बोल सकते यू शुड टेल. बोले यहाँ पे भी तो दास बने फिर रहे हो, यहाँ पे भी तो सेवा कर रहे हो, पर ये की सेवा यहाँ पे इंद्रियों की कर रहे हो. ठीक है, तो जस्ट टेल हर. Okay, next who will be there? Asta, see if your mic is working. Hare Krishna Yes, Mataji. now it's working. Hare Krishna. तो पता नहीं ये भी बीच बीच में ना सा लगा एक्चुअली. हाँ, तो Okay. जैसे मेंशन था ना कि लविंग डिवोशनल सर्विस है ना, लाइक वी कैन रिमूव द the effects of Yes. passion, ignorance and things like lust, तो और फिर एक पॉइंट बीच में मैं पढ़ते समय ये मेंशन हुआ, मतलब लास्ट श्लोका में भी हमने पढ़ा कि like serving the Vaishnava, by serving the Vaishnava we can get the loving devotional service. Yes, irrevocable So, loving Mataji, devotion service ऐसे- established in our heart. Yes. Yes, ऐसे ही मतलब मेरा माइंड में आ रहा था कि जैसे एक्चुअली मेरा रियलाइजेशन था कि लाइक व्हेन वी कम एन एसोसिएशन फॉर द प्योर डिवोटी और वी सॉ देम, मतलब वो मोड का इफेक्ट नहीं पड़ता है.
उस टाइम Yes. पे, क्योंकि यस एक्चुअली मैंने देखा है वो, जैसे हम अभी होम में रहो कि मॉर्निंग रहेगा तो फतेहपुर लाइक यू Yes. नो यस मतलब गुडनेस में रहेंगे इंसान, बट लेकिन जैसे दिन But वहाँ पे with the सब टेंशन है devotees, कि you are आपको always in काम trance. करना है. यस एंड व्हेन लाइक यहाँ पे जब जैसे डिवोटी को संग करो ना, तो ऐसा समझ ही नहीं आता कि कोई मोस्ट काम कर रहा है बैकग्राउंड में, लाइक यू नो वी Yes. डिडंट गेट दैट and we didn't feel any effect of this mode. Like we always feel like, we have to serve Krishna, we have to like that. No, we always always have the service mode in our mind, and we always feel happy also, like you know, by serving. And तो उस टाइम पे फिर एसोसिएशन के टाइम पे तो ऐसा कोई मोड का असर ही नहीं करता. तो मेरा रियलाइजेशन था कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, लाइक you know. So when used to be like when I visited Mayapur, then we were like a whole all day we were used to be in association of devotees, like you know, whole day we used to chant, do the Nagar Sankirtan in the area of Mayapur. Yes. Like There is full-time yes, engagement with the devotees, traveling. either reading, Yes, hearing. and I'm literally telling, you know, Yes. even in a single time, I didn't even get, I was like, I don't even like feel like I use phone. I literally stopped using phone whole 10 days. I was just opening off that thing, no, talking with no one, nothing. I was literally telling, I was like, मुझे कोई मोर से फील ही नहीं हो रहे थे कि अच्छा ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं, nothing. And I feel like, oh, all time blissful, Yes. full of joy. This and is actually realization, Mataji. was जो so भी wonderful. भक्तों के संग में, it's very nice realization. Thank you so much for sharing. Now it will inspire other people also to get more association. So आप सबने देखा जैसे माता जी बता रहे जब संग में रहे, so it's not that she was a moment she was thinking of anything else. Like all the time you're into the trance, you're chanting, reading, hearing Harinam Sankirtan, some services are there. So all the time you are trance because you are engaged in devotional services, and it becomes easier when you are the devotees are there. तो हमारे लिए आसान हो जाता है, नहीं तो मुश्किल रहता है. So this is there. That's why we said we have to serve the Vaishnavas. Then we will that loving devotional service will establish in our heart, and it will remain there. So somehow rather be in association, be in sangha, either online or physical sangha, whatever you're getting, just take it, grab it, take it, and take full advantage. So that will be there. Thank you so much for sharing, Mataji. Yes, Bhavika Mataji, do you have anything to speak up or any questions or comments or any realizations? Mataji, I wanted to Please little loud, Mataji. Mataji, can you hear? Yes, I am, but the voice is very low, Mataji. Because I don't have the Okay, earphones with me right now, so you need to be little loud. I wanted to ask that, could you give an example of a person in Shuddha Sattva Guna? Give an example of a person who is. Can you repeat or can type it out, Mataji, because your voice is very low for me, so I'm not able to make the question. So can you just type it out? You are asking me for an example of a person. What kind of person? Just type it out, Mataji. I'll see in the chat box, because your voice is very low for me, so I'm not able to make it out. You want to ask something? क्या बोल रहे थे? वही जैसे आप वो एग्जांपल बता रहे थे ना द्रौपदी माता वाला कि कोई बोलता नहीं है. Once again. Okay, Bhavika is saying, can you give an example of a person in Shuddha Sattva Guna? Yes. Srila Prabhupada, all the Srila Prabhupada disciples, all the sannyasis, Maharaj, those who are gurus, those who are the Uttamadhikari, they are on the Shuddha Sattva Guna. Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur, Advaita Acharya, they are all Shuddha Sattva Guna. Many examples are there, Bhavika Mataji, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, all acharyas, they are on the Shuddha Sattva Guna. So these are the examples of these people in the Shuddha Sattva Guna, because they are above the trance. Srila Prabhupada is the best example in front of all of us, and whom the disciple, like the Guru Maharaj or the Uttamadhikaris, they are on the Shuddha Sattva platform. Is this the question, and is this and the answer is this, Mataji? If the question is like that, you are asking for an example of a person in Shuddha Sattva, so these are the examples. Okay. Yes. Anything else, Bhavika Mataji? No, Mataji. Okay.
Thank you so much for joining. I think it's early morning there, but it's early morning. It's good for sadhana to read and hear. So that will be there. Okay, then. Yes, you want to say something? Yeah, Priya Mataji is making one point. Yeah. वो जैसे आपने पॉइंट बताया कि द्रौपदी माता जी कैसे वो जब उन्होंने एक हाथ किया हुआ था, एक हाथ से उनको लग रहा था कि नहीं मैं मतलब कर सकती हूँ अपनी प्रोटेक्शन, तो जब उनको बिल्कुल ही लग गया कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, तब उन्होंने दोनों हाथ रेज कर लिए। तो वैसे ही मैं आज भागवतम में पढ़ रही थी कि जो प्रभुपाद ने मेंशन किया था पर्पट में कि जो डिवोटीज होते हैं कुछ कभी कभी क्या होता है, कई डिवोटीज में मटेरियल डिजायर भी होती है, तो उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा भी होती है, कहीं ना कहीं भक्ति भी करना चाहते हैं बट सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा भी होती है। तो प्रभुपाद ने मेंशन किया था कि ऐसे जो लोग होते हैं वो फूल्स हैं, तो क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। लेकिन कृष्ण इतने मर्सीफुल है, वो क्या करते हैं कि अगर किसी की ऐसी इच्छा भी है तो उसको फोर्सिबली मतलब ना उसका सब कुछ छीन लेते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो वो वैसे ही मतलब फिर मतलब प्योर डिवोशन में आ जाता है। तो वैसे ही जब द्रौपदी माता की जब तक उनकी वो फोर्स इतना फोर्स नहीं कर दिया उनको कृष्णा ने कि छोड़ दो, जब तक उनको पूरा नहीं लग गया तो तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा। वैसे ही मतलब ऐसे डिवोटीज के साथ भी ऐसा होता है कि दो तरीके होते हैं, कृष्णा जो है वो हमें सबको वापस But it लाना चाहते हैं happens in the अपने। case of a pure devotee. हाँ वही ना, वही मैं बता रही जैसे हूँ श्रीला प्रभुपाद when he was into झांसी, इलाहाबाद में थे, we remember उनका जितना भी बिजनेस था वो सारा जल गया था। मतलब एक तो व्यक्ति वो उनके पैसे लेके चला गया और सारा एक्चुअली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर was coming in his dream, take sannyas now, take sannyas, and श्रीला प्रभुपाद was denying नहीं अभी responsibility है, ऐसा है वैसा है, so he was just denying. But what happened finally, what had happened, Krishna takes away everything, and that time Srila Prabhupada read the words from the Bhagavatam, and वो यही वर्ड था कि when I am very merciful unto my devotee, I takes away everything. So that is the pure devotee. उनको force नहीं किया जाता. It's like for to get something from there to fulfill certain mission. Prabhupada Krishna takes away the material desires that will hamper their bhakti. So like that way. मतलब इसमें ऐसे मेंशन था कि दो कृष्णा जो होते हैं हम सबको चाहते हैं वापस आ जाए। कुछ लोग तो अपनी फ्री विल से आते हैं, लेकिन कहीं पे जिन पे कृपा होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि उनपे कृष्णा फोर्सिबली मतलब उनका जैसे मटेरियल ऑपुलेंस छीन लेते हैं या वैसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही उसमें आ जाते हैं। Yeah. So that was the point, but it happens in the pure devotees case. Okay? नहीं हमने ऐसे लिखा था कि जो अगर मटेरियल डिजायर भी है बट वैसा भी उनकी इच्छा भी है। Material desires matter if the devotee comes with the motives. With the passage of time as he engage in the devotions, उसके वो motive desires चली जाती हैं। वही फिर उसके material desires, उसके जो motives होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। That happens because it's the effect of the devotional service that the motives goes away. Because some people take up the devotional service out of motives. कि उनकी कुछ इच्छाएं होती है. That is called karma mishrat bhakti. मगर karma mishrat bhakti will not take them to the pure devotion until the desires will go away. और वो desires तब जाती हैं अगर वो constant संग में रहता है तो कभी ना कभी वो अपने motives को, क्योंकि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और वो जो 4 प्रकार के लोग हैं सभी लोग तो भगवान की डायरेक्ट सेवा के लिए तो नहीं आते ना. They have some motive to carry on with, but if they remain, take the association of devotees, they're able to give up those things. So that's how it's a gradual thing. It happens. Understood, Mataji? Okay. So let's chant 3 times Hare Krishna. See you all in the night Bhagavad Gita class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the night for Bhagavad Gita class. Hare Krishna.